कितने दिन है आपके पास? तो दिन छोड़ यार, तू बस मैं हाँ अभी गुलमर्ग में हूँ आप, ठीक है? ठीक है। गुलमर्ग आज नाइट हम एक दिन इधर रुका ना, हम सोच रहे हैं इनको द्रंग से वहाँ भेजनी चाहिए रात को। हाँ। कहाँ जो द्रंग वैली से जाते हैं ना। आप क्या मानते हैं, सिर्फ कैंपिंग में रुकना है, कहीं होम स्टे वगैरह? नहीं क्या कुछ नहीं, वो गाड़ी में सिर्फ गाड़ी सिर्फ गाड़ी में। 5 महीने से हम गाड़ी में सोते हैं। गाड़ी में। So what do you guys cook for yourself for the breakfast? Yeah, we had Maggie. Yeah, today we made Maggie. Maybe for the second time. Yeah. You know, how was the food? It was really nice, guys. And we three walked for almost 30 to 45 minutes, I guess. Yeah, it was really nice. See, even this place and the weather, everything is so perfect. He's saying that it will only There for 4 to 5 months. Yeah, and after that it will be fully covered by snow. This place is fully covered by snow. Up to 10 feet, no? Yeah. But this place is really amazing. Just see. We are getting a 360-degree view here. दोस्तों सच में इसको मिलकर बहुत मजा आ गया. We have invited us many times. That's why only we have went to his place, and we had amazing food from there. And more than that, the way he's showing the love. Yeah, the love. It is really nice, you know. Yeah. It's been one of our best experience in this trip, I can say. The And we way had a long conversation. about the people here and the perspectives and the politics and the religion perspective, everything. I mean, I'm still in that hangover, you know. Anyway, I'm just taking that memory with us. I mean, we are just taking that memory with us, and we are moving forward for another great memories. Next. Yeah. Memories. And guys, we are going to do off-roading with our boy. But this is not going to happen. Yeah. Yes. Come on. No man. പക്ഷെ ഇത് കയറ്റണല്ലേ, ഒന്നൂടെ ട്രൈ ഒന്ന് കയറ്റിയേ പോണം. हमारा ऑनिंग्स है ना, वो खराब हो गया. क्या बोलते हैं इसका, फेंस. वो फेंस हमारा ऑनिंग्स में टच कर वो खराब हो गया भाई. खराब हो गया. कोई मुश्किल नहीं, हम रेडी करूँगा. ഹിന്ദി ഇന്ത്യ പക്ഷെ ഇവരെ മുന്നിൽ ഇന്ത്യ സംസാരിക്കണം. വേണം. Okay, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. While going to Tangmang, we met two Mallus over here. I'm Fazana. Myself Said Muhammad. Okay. We are from Kerala. Kerala and Also from Dubai. And now they came from Dubai to explore Kashmir for 7 days, no? Yeah, for 7 days. And they hired a bike from Srinagar. Since 3 days you are traveling here. So anyway, it's really nice to meet you guys. And more than that, we made a tea and we spoke for more than 2 hours, I guess. Yeah, we had a good time. Yeah, it was. Okay, so cheers. Thanks for the time. Okay. Yeah, welcome. Especially the tea. Okay. Also. I know how it was. First time. Yeah. Yeah, it was really. Yeah. Okay, fine, leave it. We won't bother about that. Okay, bye. Maybe this is the last time we are going to see this view. At least for a while. इधर से हमको
रंगमार्ग जाना चाहिए, उधर हम आज रहने के लिए सोच रहे हैं। इधर से 8 किलोमीटर है, वो भी बढ़िया जगह है। ये ड्रंक जाने के लिए रास्ता है, देखो इधर का व्यू बहुत बढ़िया है ना विष्णु। बहुत बढ़िया। 2 दिन पहले 2 दिन पहले वो नदी का आसपास हम एक दिन कैंपिंग कर दिया। अभी रोड सही है, मतलब पहले हमको इतना अच्छा रोड नहीं मिला। द प्लेस वेयर वी आर गोइंग नाउ इट्स लाइक अ अनएक्सप्लोर्ड प्लेस इन Kashmir, so we are really excited to see that place. Vishnu, are you excited? Yes. Man, show some interest, man. नहीं just see this यार। अच्छा देखो साइड में फेंस कुछ नहीं है, उसके लिए थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। राइट में जाना चाहिए। राइट करते ये ड्रंक एक्वा विलेज। ओ अच्छा, इधर भी बहुत टूरिस्ट है। Life threatening sudden change of water flow. सही है, बहुत सुंदर है ना वो फ्लावर। इस जगह में पूरा देखो फ्लावर है, मतलब येलो कलर, वो बहुत सुंदर है देखने के लिए। और अभी तो सनसेट का टाइम भी हो गया। सच ए नाइस पीसफुल प्लेस यू नो। It's so beautiful. See, we have not seen any vehicle from last 2 to 3 kilometers. It is a narrow road. Vishnu is driving. So that guy has said that if you find any good place nearby, you can park your vehicle and you can do camping. There is no issue at all. Can you stop here? I'll take a video from outside. Nobody is here. Only me, Vishnu and my Jeep. And the amazing nature. I know that I might be doing many mistakes while talking to you people. But it's okay. This is my first vlog in Hindi and English now. It's been a while that I didn't wash my vehicle. Come, let's go. Let's go. Finally we reached Rangmar, guys. Rangmar. So I guess this is Rangmar. Here no one is there to ask. Anyway, we'll try to meet someone so that we can ask to those people which are the really awesome places here. Oh my god. Can you stop here? There is a slight change in our plan. We decided to leave this place and plan to go to Bangas Valley, which is 95 kilometers far from this place. So we just thought that we'll travel for a few kilometers more today until the light goes. After that we'll stop the vehicle somewhere and we'll do the camping. And tomorrow morning we'll head towards Bangas Valley. Even those places very nice. दोस्तों हम अभी सन्नलोर पहुंच गया। ये श्रीनगर से गुलमर्ग जाने का रास्ता है। विष्णु उधर गया, उधर क्या पता नहीं क्या मिलेगा हमको। इधर कबाब मिलेगा। भाई ये क्या है? बीफ। अच्छा कितना है? 40 रुपए में एक है।
₹40 एक 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 दे दो भैया बस एक ही टेस्ट करो अच्छा है क्या वही ना ये 400 ओके 4 ग्राम 400 ठीक है हाँ ठीक है बोलो और मैरीगोल्ड बिस्किट है क्या अभी हम खैपोरा एक गांव में पहुंच गया इधर हम लोकल वालों के साथ बात कर कर इधर रुकने के लिए परमिशन ले लिया इधर से 80 किलोमीटर है बंगस वैली के लिए इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना रहने के लिए ठीक है आर्मी आएगा लेकिन हमारा डॉक्यूमेंट सब दिखाना चाहिए इतना बस ठीक है थैंक यू बाय बाय गाड़ी के अंदर सोए आराम से सो गए मैं बहुत लोग सुबह से आ रहे हैं गाड़ी देखने के लिए और गाड़ी का अंदर देखने के लिए सब के लिए अभी तो सब उधर गया हम मुड़ने के बाद सामान सब पैक कर दिया और टेंट भी सब फोल्ड कर अंदर रखा अभी इधर से हमको जाना चाहिए उसके पहले हमको टॉयलेट यूज़ करना चाहिए पता नहीं कहाँ पे हमको टॉयलेट मिलेगा इधर विष्णु कैसे सो गया कल बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया This way only we had to go Bungus Valley. So we have stopped the vehicle just by seeing walnut tree actually. See, this is the walnut tree. And here we can see apple trees also. If you guys really liked the video, please do subscribe and support our channel. So we'll meet next time. See you guys. Bye bye.